गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। स्टार्ट करें क्लास। एक्साइटेड? ओके, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी पंक्चुअल। सो वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ योर डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन कोर्स। फर्स्ट क्लास है आज। मैं आपको प्लान बता देता हूँ। प्लान ये है कि 15 मिनट्स मैं आपका एक छोटा सा ओरिएंटेशन सेशन लूंगा, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट्स हो सकते हैं वो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको आपके इंस्ट्रक्टर से मिलवाऊंगा, और फिर उसके बाद आपकी नॉर्मल क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्लो। मैंने एक छोटा सा पीपीटी बना रखा है, वो पीपीटी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। उसके बाद द इंस्ट्रक्टर विल टेक ओवर। ठीक है? एक बार विजिबल लिखना अगर आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। इज इट विजिबल? ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस। सो दिस इज़ जस्ट ऑपरेशनल स्टफ। आप लोगों ने हमारे साथ एक कोर्स में एनरोल किया है। मैं बस सारी चीज़ें पहले ही दिन क्लियर करना चाहता हूँ कि इस पूरे कोर्स में क्या कैसे होगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये 15 मिनट्स देख लोगे और समझ लोगे सब कुछ, तो फिर आपको आगे कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके। सबसे पहले आई ऑलवेज लाइक टू डिस्कस द वाई पार्ट ऑफ वॉट एवर आई डू। सो यहाँ पर भी हम एक कोर्स लेके आए हैं, डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन। मैं आपको हमारा विजन बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स हम क्यों लेके आए हैं। अ, अगर आप मुझसे पूछो, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पिछले 2 सालों में जो हुआ है एआई की फील्ड में, वो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था अगर आप 5-10 साल पीछे जाओ। अब हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो जिनके बारे में हम एक्चुअली ये कह सकते हैं कि दीज आर एआई एनेबल्ड। इनमें सच में खुद का दिमाग है। और ये सारा प्रोग्रेस पिछले 2 से 3 सालों में हुआ है, चैट जीपीटी और जो भी टूल्स आए हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दो मोडालिटीज दिखाई देंगी जिनके ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ है। एक है टेक्स्ट का डोमेन, जहां पर आपको चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा है विजन का डोमेन, जहां पर इमेजेस के ऊपर बहुत काम हुआ है। ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही फील्ड्स आगे चल के और ज़्यादा ग्रो करेंगी और हमारे लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को टच करेंगी। तो टेक्स्ट के ऊपर कैंपस एक्स में काफ़ी कुछ है। विजन के डोमेन में हमने उतना ज़्यादा काम नहीं किया था। एंड दैट इज़ वाई मेरे दिमाग में एक कंसर्न चल रहा था कि वो स्टूडेंट्स जो विजन के डोमेन में काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर विजन इंजीनियर बनना चाहते हैं, या डीप लर्निंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं विजन के डोमेन में, उनके लिए भी हम कुछ लेके आए। और मुझे आपकी साइड से भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने पिछले 3-4 महीनों में मिल करके एक कोर्स प्रिपेयर किया है। एंड वो कोर्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि हमारा विजन क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। हमारा विजन बहुत सिंपल है। विजन का डोमेन बहुत डीप है, मतलब इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है। लिटरली आप देखोगे कि लोग पीएचडी तक करते हैं, 4-4 साल की पीएचडी करते हैं विजन के डोमेन में। तो ऑब्वियसली हम उतना डीप नहीं जा रहे। हमारा कोर्स थोड़ा सा शॉर्ट है, अराउंड 25 क्लासेस का 3 मंथ्स का कोर्स है। और मेरा गोल ये है कि हम आपको बिगिनर लेवल से उठा करके इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाएं और आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कराएं। इन अ वे ये जो कोर्स है ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा अगर आप विजन के डोमेन में काम करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग। अब ऑब्वियसली सिंस देर आर 25 क्लासेस, हम हर टॉपिक के बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाले, वो पॉसिबल ही नहीं है। वॉट वी विल डू इज कि हम इस पूरे कोर्स को बहुत हैंड्स ऑन रखेंगे, विच मीन्स हम आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। और हमारा ज़्यादा फोकस होगा हैंड्स ऑन तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाना, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना। एंड दैट इज़ वाई हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो भी हमने इस तरीके से पिक किया है, जिसको अगर आप अच्छे से कर पाओ तो उसको आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, सेल्फ ड्राइविंग कार वाला प्रोजेक्ट। दिस इज़ द मेन विजन कि आपको एक बिगिनर लेवल से उठा करके इंटरमीडिएट लेवल तक हम लेके जाएं। बट ऑब्वियसली एडवांस तक की पहुंचने की जर्नी आपको खुद से करनी पड़ेगी, या फिर फ्यूचर में हम कुछ और ज़्यादा डेप्थ वाले कोर्सेज लाएंगे। तो ये इन शॉर्ट हमारा विजन है। आई रियली होप यहाँ पर हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैच कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से मैं आपको कोर्स का फ्लो बताता हूँ कि ये जो 3 महीने का कोर्स है ये एग्जैक्टली हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो कोर्स का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सॉरी, ये लास्ट वाला चीज़ में मैंने एनिमेशन लगाना मैं भूल गया, बट ऊपर से देखते हैं। सो वी विल हैव इन टोटल 25 क्लासेस। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, प्लस ही होगा, माइनस तो होगा नहीं। सो ऐसा हो सकता है कि एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा हो, बट वी आर टारगेटिंग 25 क्लासेस। 25 क्लासेस में हमारा फ्लो ऐसा रहेगा कि हम हर वीक आपकी 2 क्लासेस कंडक्ट कराएंगे, सैटरडे एंड संडे शाम को 6 बजे, ठीक है। और ये पूरा कोर्स अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, और जितना हमने शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है उसके हिसाब से अगर हम स्टिक करें तो अक्टूबर के एंड में जाकर के खत्म होगा, ठीक है। दिस विल बी द फ्लो, 2 क्लासेस पर वीक, सैटरडे संडे 6 PM IST। ये बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था बिकॉज मैंने इस तरीके से लॉन्च वीडियो में बोल दिया कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि इस कोर्स में हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है गाइस, कैंपस एक्स पे आप कोई भी कोर्स करो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है। जैसे आज ये जो लेक्चर हो रहा है इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह तक आपके कोर्स डैशबोर्ड में मिल जाएगी। सो 25 लेक्चर्स होंगे, हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगा 3 सालों तक। आपका कोर्स वैलिडिटी 3 सालों का है, तो 3 सालों तक आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पीरियड है, ठीक है। उसके बाद हम आपका हर वीक एक डाउट क्लियरेंस सेशन भी रखेंगे, ठीक है। और वो डाउट क्लियरेंस सेशन ट्यूसडे को होगा, और वो रात में 8 बजे होगा, ठीक है। द आइडिया ऑफ दिस डाउट क्लियरेंस सेशन इज कि बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं, एंड ऑब्वियसली क्लास में डाउट्स आएंगे। तो क्लास में अगर हम डाउट्स क्लियर करने जाते हैं तो क्लास थोड़ी सी ऐसे रुक रुक के चलती है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस खराब होता है। तो इसीलिए हम आपके वीक के सारे डाउट्स को लेकर के ट्यूसडे को सब कुछ सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि हम आपको हर वीक एक असाइनमेंट देंगे, ठीक है। वो असाइनमेंट आपको मंडे को मिलेगा, आप उसको पूरे वीक सॉल्व करोगे, और हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीक के डाउट क्लियरेंस क्लास में देंगे। सो फॉर एग्जांपल आज और कल आपने कुछ पढ़ाई की, तो इसके बेसिस पे आपको मंडे को एक असाइनमेंट मिलेगा। अब आप मंडे से लेकर के अगले मंडे तक उस असाइनमेंट को सॉल्व करो, बिकॉज वो असाइनमेंट थोड़ा सा हैवी होगा। और फिर अगले ट्यूसडे हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे इन द डाउट क्लियरेंस सेशन। तो 10 वीक्स है ऑलमोस्ट हमारे पास, 10 to 12 वीक्स हैं। जितने वीक्स उतने नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। ये असाइनमेंट्स आपको आपके कोर्स डैशबोर्ड में दिखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे लेट मी शो यू कि आपका कोर्स डैशबोर्ड कैसा दिखने वाला है। आई एम प्रिटी श्योर आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, बट मैं आपको ज़रा सा गाइड कर देता हूँ। ये आपका कोर्स डैशबोर्ड है, यहीं पर आप क्लिक करके जूम क्लास में लॉग इन किए होगे। सो यहाँ पर हैपनिंग सून या फिर नेक्स्ट अपकमिंग लाइव क्लास, यहाँ पे आपको अगली जो भी क्लास आने वाली है वो दिखाई देगी। जनरली हम 6 से 8 घंटे पहले क्लास अपलोड करते हैं, तो हम आपको मेल भी भेजते हैं। आई होप आपको आज मेल्स आए थे। एक बार कोई जल्दी से बताओगे, आपको हमारी साइड से मेल आया था? हाँ, तो ऐसा ही हर क्लास के पहले आपको मेल आएगा, ठीक है। आज शायद 2 मेल्स आए थे, बट गोइंग फॉरवर्ड आपको एक मेल आएगा, और वो जनरली क्लास के 2 घंटे पहले आता है, ठीक है। उसके बाद ये एक सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग बोल के सेक्शन है, इसमें हमने कोर्स का करिकुलम ऐड कर रखा है, ठीक है। ये हमारा कोर्स का करिकुलम है, तो आप जाकर के एक बार देख लो, आई एम श्योर आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पर हमने कोर्स का शेड्यूल ऐड कर रखा है। सो कभी कभी अगर हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, सिंस वो भी वर्किंग है, तो कभी अगर उनका ऑफिस हो गया और कभी क्लास हमने पोस्टपोन करनी पड़ी, वो सारा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सो डोंट वरी, ठीक है। थर्ड इज FAQs। एक बार प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, इवन दो आपने कोर्स में एनरोल कर रखा है, आप ये FAQs एक बार गो थ्रू कर लेना। जो भी आपके ऑपरेशनल डाउट्स हैं इस कोर्स से रिलेटेड, वो यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखे हैं। जितने भी मेल्स आते हैं, मेल्स पे जो भी क्वेरीज आती हैं, हमने उनको स्टडी किया और ये डॉक्यूमेंट बनाया है। तो एक बार ये पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड लास्टली आप लोगों के लिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर्म की है। आप क्या करो, इस लिंक पे क्लिक करके इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, और इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में ही हम लोग क्लास के बाद जो भी डिस्कशंस होंगे वो किया करेंगे, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक कम्युनिटी अच्छी तभी बनती है जब उसके अंदर के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से उस कम्युनिटी को चलाते हैं। ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम वहाँ पे 10 मैसेजेस करें और आप लोग एक दूसरे से बात ना करो तो कम्युनिटी का कोई मतलब नहीं है। सो कम्युनिटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लीज़ ऐसा करना कि सामने से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको आंसर आता है, प्लीज़ उसको आंसर करना। तभी सामने वाला भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और प्लीज़ कुछ भी ऐसा शेयर मत करना जिससे
कम्युनिटी का सेंटिमेंट है वो खराब हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पॉलिटिकल चीज़ें शेयर करते हैं, मीम शेयर करते हैं। लेट्स कीप दिस वेरी एक्सक्लूसिव फॉर डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन। उसी के इर्द गिर्द आप डिस्कशंस करो, जॉब्स के बारे में डिस्कशंस करो, प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरे की हेल्प करो, अननेसेसरी चीज़ें शेयर मत करो, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी। एंड लास्ट जो सेक्शन है वो है सेशंस रिकॉर्डिंग का। तो जो भी सेशंस कंप्लीट होते जाएंगे वो यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। जैसे आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद कल आपको उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिखेगी सेशन रिकॉर्डिंग के नीचे। सो 25 सेशंस, ऑल सेशंस यू विल फाइंड ओवर हियर, ठीक है। तो आई रियली होप ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। सो ये हो गया कोर्स फ्लो। आई रियली होप मैंने क्विकली सब कुछ बता दिया। कोर्स डैशबोर्ड मैंने आपको दिखा दिया, व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। सर्टिफिकेट बहुत सिंपल है, सर्टिफिकेट मिलेगा जो भी लोग इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आप सारे के सारे सेशंस अटेंड करते हो, नॉट सारे के सारे बट मोस्टली अगर आप सेशंस अटेंड करते हो, ऑनेस्टली हम कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करते सर्टिफिकेट पे, बिकॉज हमें लगता है कि वो काफ़ी चाइल्डिश है। आप सब लोग ऑलरेडी जॉब में हो या फिर कॉलेज में हो, सो बेसिकली आप लोग अडल्ट हो, और हम आपको प्रेशराइज नहीं करना चाहते। वी जस्ट वॉन्ट कि आप इस कोर्स से मैक्सिमम वैल्यू डिराइव करो। जब ये कोर्स खत्म होगा हर किसी को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल जाएगा अगर आपने पेमेंट किया है इस कोर्स का। बट आई वुड रिकमेंड प्लीज आप कोर्स की क्लासेस करना, ठीक है। नेक्स्ट इज फीडबैक। जो भी लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो, आप लोगों में से आप लोगों को पता है कि वी टेक फीडबैक वेरी सीरियसली, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि फीडबैक हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो इस कोर्स में भी हम आपका 3 बार फीडबैक लेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, एक फीडबैक लेंगे 5 क्लासेस के बाद, दूसरा फीडबैक लेंगे 10 क्लासेस के बाद, और फिर कोर्स के एंड में एक फीडबैक लेंगे 25th क्लास के बाद। सो हमारा जो 5th क्लास के बाद वाला फीडबैक है और जो 10th क्लास के बाद वाला फीडबैक है, वो ये समझने के लिए है कि जो भी हम डिलीवर करना चाह रहे हैं हम सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज आप 5th और 10th क्लास के बाद वाले में थोड़ा कंस्ट्रक्टिव तरीके से बताना कि हम अपनी क्लासेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस कि हम उसके ऊपर काम करेंगे। 25th वाले के बाद जो फीडबैक आप लिखना, वो आप कितना भी आपको गाली देना है, पसंद आया नहीं पसंद आया, आप खुल करके लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 5th और 10th इज वेरी क्रूशल, बिकॉज वो कोर्स के बीच में है एंड इट विल हेल्प अस इंप्रूव द कोर्स, ठीक है। सो फीडबैक का पॉइंट हो गया। एक और चीज, इस पूरे ड्यूरेशन में अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। वी प्रॉमिस यू कि आपको विद इन 24 आवर्स रिजोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो कभी किसी का अकाउंट लॉक हो गया या फिर सर्टिफिकेट रिलेटेड इश्यूज हैं, इस तरह का कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप यहाँ पर हमें मेल कर सकते हो, ठीक है। दिस इज आवर ऑफिशियल मेल आईडी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है आपसे, प्लीज इस कोर्स से अगर आप मैक्सिमम डिराइव करना चाहते हो वैल्यू, तो आप साथ में चीज़ों को करना। हमारे जो टीचर हैं वो आपको चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, कोड सारे वो करके दिखाएंगे, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आप खुद से उसको अपने लैपटॉप पे ट्राई नहीं करते। इनफैक्ट वो डाउट क्लियरेंस सेशन हमने रखा ही इसीलिए है ताकि जब आप अपने लैपटॉप पे ट्राई करो और आपको प्रॉब्लम्स आए तो हम उसको रिजॉल्व कर पाए। तो प्लीज़, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो वीडियोस देख लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हाँ आ गया है, बट ट्रस्ट मी आपको नहीं आता है। दीज आर ऑल स्किल्स, और स्किल्स आप करके सीखते हो। इट्स लाइक स्विमिंग, आप किसी को देख करके स्विमिंग नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। सो प्लीज, इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, इस कोर्स में वेन एवर यू वॉच अ लेक्चर, मेक श्योर आप साथ में उसके ऊपर काम भी करो, ठीक है। सो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। अब दिस इज द टाइम, आई इंट्रोड्यूस द इंस्ट्रक्टर। सो इस कोर्स में हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, मैंने एक्चुअली बहुत सारे टीचर्स को ट्राई आउट किया एंड फाइनली हमने जिनको सेलेक्ट किया, उनको आप जानते भी होंगे शायद, बहुत लोगों ने उनकी क्लासेस भी की हैं। हिज नेम इज़ बालाजी, बालाजी चिप्पड़ा। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट। पिछले 6 सालों से वो इंडस्ट्री में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एंड डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन में ही हैज़ गॉट ग्रेट नॉलेज। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाओगे और वहाँ कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे 2 फ्री कोर्सेज हैं। वन इज इमोशन डिटेक्शन, वन इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ये दोनों कोर्सेज उन्होंने कंडक्ट कराए हैं, और आई डोंट नो आपने वो कोर्सेज किए हैं कि नहीं, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो फीडबैक आया है वो 4.7 के ऊपर है, विच मीन्स बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है। सो ही इज गोइंग टू बी योर इंस्ट्रक्टर। बालाजी, इफ यू कैन हियर मी, कैन यू कम ऑन स्क्रीन? Yes, yes, Nitesh, I can hear you. Thank you for very kind words. Yes. Yes. So over to you. You can start the session. So Sure, I'll sure. I'll just pause my audio. Uh, Hello, guys. How are you doing? I hope my audio and video is very clear.
Once if that is clear, just confirm it on the chat and then we can proceed with that. Cool, cool. So for those who don't know, I will just introduce myself for the next 2 to 3 minutes, and then maybe we can start with our class. Myself, Balaji Chipada, and I have been working in the industry for the past 6 years, and speak. And I graduated from NIT Calicut in 2018. एंड पोस्ट दैट आई हैव बीन वर्किंग, आई मीन इसी फील्ड पे काम कर रहा हूँ मैं अभी। आई एम करंटली लोकेटेड इन पुणे, एंड मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टीचिंग एक्चुअली। आई वांटेड टू explain all of the things that I know personally to a lot of people. So that is why I came on to this platform. So hopefully you will be able to learn something. मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बात करने के लिए, बट कभी कभी ऐसे लगता है कि आई कैन डिलीवर बेटर इन इंग्लिश, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मैं कोशिश करता हूँ हिंदी पे बात करने के, बट थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है बस टू गेट इन द फॉर्म। Okay, so that is about myself. For the next 1 minute, let's just know from where you all from, so that I know kaha se aap log. You can just put it in the chat, and then in the next after 1 minute, we will just start with the course. Okay, Hyderabad, Pune, Delhi, Bangalore, Surat, Kolkata, Uttarakhand, Bhubaneswar, Delhi, West Bengal. Okay, we there are people from Australia as well, Abu Dhabi. ठीक है, that is a wide variety of people from different parts of the country itself. Yeah, cool, cool. Lucknow, Agra, great. Uh, okay, that is so good to see a lot of people from different regions. I see some people from Hyderabad as spamming on the messages, but ठीक है चलेगा. So that's good. So हम चालू करते हैं. We will not waste a lot of time because we have only 2 hours and we want to learn as much as possible. So everything will start. सो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ. अगर आपको देखना है तो एक बार मैसेज कंफर्म कर लीजिए एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द सेशंस. हाँ हाँ, एंड यू शुड सी समथिंग इन ए मिनट. यस, यस, यू शुड सी माई नोट्स अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन. मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं एक्चुअली. विजिबल विजिबल, एबल टू सी. ओके, ग्रेट. Visible, visible, visible. Okay, great, great. That is good. So already Nitish ji ne they have uploaded the whole curriculum of the course onto the website. So वहाँ पे we will try to follow that curriculum. नीतीश जी और मैं मिलके वो curriculum बनाया. सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वी विल मर्ज 2 to 3 सेशंस इन ए सिंगल सेशन. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, बट वी विल ट्राई टू कीप अप विद द करिकुलम इटसेल्फ. अप्रोक्सीमेट 25 सेशन तक हम कर लेते हैं. एंड पहले हम लेट्स टॉक अबाउट ए कंप्यूटर विजन होता क्या है एंड व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग दैट वी वांट टू लर्न. सो द फर्स्ट थिंग इज, समझो यहाँ पे लेट्स से दिस वी हैव डेटा साइंस. डेटा साइंस और एआई के अंदर बहुत सारे चीज़ें. इट कुड बी ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग हो सकता है, डीप लर्निंग हो सकता है, एंड मे बी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो सकता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स to train predict something. So there are a lot of segments inside this data science. So इसके अंदर डीप लर्निंग के अंदर वी हैव ए पार्ट लाइक एनएलपी. एक चीज है विच इज फोकस्ड मेजरली वो टेक्स्ट डेटा के ऊपर काम करता है एनएलपी पे. सो जैसा मशीन लर्निंग और डीप डेटा साइंस इमेजेस के ऊपर काम करते हैं ना, सो उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन एक्चुअली. सो इट इज बेसिकली विजन. यहाँ पे मेजर फोकस होगा हमारा इमेजेस एंड वीडियोस. जैसे हम किसी पिक्चर को देखते और हम फोटो खींचते फोन पे, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच इन्वॉल्व अराउंड इमेजेस एंड वीडियोस आर गेटिंग अंडर ए सेगमेंट कॉल्ड कंप्यूटर विजन. सो कंप्यूटर विजन होता क्या है? इट इज लाइक हमें एक मशीन को विजन का कैपेबिलिटीज दे रहे. दैट मीन्स वी आर लेटिंग द मशीन अंडरस्टैंड
what is an image or what is happening inside an image. अगर एक समझो आपने एक आपका फोन से एक पिक्चर खींचा and think about machine is suggesting what is the inside the picture, so that is called a vision thing actually. English, please deliver it English. I won't understand Hindi. ठीक है, कोई इंग्लिश कर लेते हैं, दैट वुड बी ग्रेट. हाँ, सो लेट्स अज्यूम यू टेक ए पिक्चर ऑन योर मोबाइल फोन एंड द the moment you are viewing that image, the machine will understand what is happening in the image, whether there are birds or whether there are any kind of stuff that is happening on the image. So that is the vision capabilities that we are providing to a machine. So इसको इस segment को बोलते हैं computer vision actually. सो यहाँ पे इधर वीडियोस हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, और मिक्स ऑफ बोथ हो सकता है. एंड कभी कभी वी प्रोवाइड वीडियोस और इमेजेस विद द टेक्स्ट डेटा सारे मिलके भी दे सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच रिवॉल्व अराउंड दीज थिंग्स आर फॉलिंग अंडर द सेगमेंट कॉल्ड कंप्यूटर विजन. ठीक है. सो ये मशीन को कैसे समझ में आता है, लाइक हाउ डज मशीन्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द ऑनगोइंग क्लासेस. एंड सो उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन एट ए हाई लेवल, लेमन टर्म्स पे. किसी को बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं. एंड अभी पहले हमने ये कवर किया कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, लाइक व्हाट अबाउट माई सेल्फ एंड ऑल दैट स्टफ. एंड वी हैव सीन वी हैव पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, so that is fine. And second, I will talk about my teaching style a little bit. For those who know, that is fine. For those who don't know, I prefer to speak in English, but कभी कभी लोग पूछते भी थोड़ा हिंदी पे भी, इंग्लिश पे भी सिखाओ. सो आई ट्राई टू मिक्स एंड मैच बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. बट मेरा प्राइमरी लैंग्वेज प्रेफरेंस है इंग्लिश हो सकता है, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी बैरियर्स. एंड आई ट्राई टू राइट एवरीथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. मैं ऐसे पीडीएफ खोल के, पीपीटी खोल के नहीं सिखाता हूँ. कभी कभी आई प्रिपेयर द PPTs as well based upon what kind of content that I'm trying to deliver. But 80%, 60%, 90% of that time, I will keep everything on the blackboard itself. I will try to explain everything and I will write it on the blackboard itself. So I hope that is comfortable with you. uh, ठीक है. अच्छा, चैट बॉक्स पे आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, आई विल क्लोज चैट बॉक्स, सॉरी, थैंक यू. एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी प्री रिक्विजिट्स क्या होता है. सो इस पे let me talk about that actually. So when you talk about deep learning, इसके अंदर एज ए मेंशन बिफोर एक चीज हो सकता है मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन्स, ए बेसिक चीज है. इस पे क्या होता है, व्हाट इज ए न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, एंड व्हाट इज ए डीप लर्निंग आर्किटेक्चर कैसे होता है, एंड हिडन स्टेट्स कैसे होता है, क्या होता है, कनेक्शंस वगैरह रहते हैं ना. सो दीज आर ऑल द बेसिक स्टफ दैट यू नीड टू नो अबाउट डीप लर्निंग. एंड यहाँ पे हम आएंगे विजन पे, कंप्यूटर विजन. So if you want to understand computer vision more clearly, then I would suggest having a basic understanding of MLP. That would be really great. And I would also expect basic understanding of Python coding, because I want you to understand and write code in Python. Because if you don't know the Python coding, it will be little bit hard for you to follow the assignments or maybe whatever I'm trying to explain in the coding part. So you need to know a little bit of Python. I will try to keep everything as crisp and clear as possible. But आपको यहाँ पे prior expertise है तो बहुत अच्छा लगेगा. एंड डीप लर्निंग के एमएलपी का थोड़ा रखना चाहिए. सो if you don't know this and MLP and all that stuff, I would highly recommend to watch Nitish sir का 100 days of डेटा साइंस प्लेलिस्ट है ना, उस पर डीप लर्निंग का चालू 3-4 वीडियोस देख लीजिए. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द बेसिक्स ऑफ MLP. एंड इसके अलावा आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ड्रास्टिक फॉर यू टू हैव द प्री रिक्विजिट्स. इतना बस है टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम अबाउट टू टीच ऑन दिस कोर्स. ठीक है. एंड देन एज ऋषि mentioned before, like it is highly appreciated because you are taking time and then coming and sitting in 2 hours and learning and upskilling yourselves. So I want you to be consistent in attending the classes, and then I want you to be consistent in practicing whatever that we are learning in
ईच क्लास। अभी पहले एक दो क्लास पे इतना ज्यादा लर्निंग कर्व नहीं रहता है, बिकॉज पहले आप आई विल ट्राई टू गिव यू ओवरव्यू ऑफ हिस्ट्री, क्या होता है कंप्यूटर विजन, कैसे काम करता है, लाइक आई विल गिव यू द हिस्ट्री एंड बेसिक चीजें। बट मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, we have all of these techniques and all of the stuff that we are learning. I want you to practice those things and understand yourself. अगर आपने consistently practice नहीं किया, it is a waste of money and waste of time from your side and my side as well, because I want to teach whatever I know, and I want to teach it wholeheartedly, and I want you to practice and then come back to us with doubts and all that stuff. ठीक है? And as mentioned before, feedback is very important, because I also like to, I mean, I also like to improve myself wherever, if I'm lacking somewhere and all that stuff. So I think these would be a good starting point for me to talk about. And then if you have any queries, I mean, if you have any doubts at all, I will just take some questions here, and with that we will close with all the introduction stuff, and we will start with the main theory concept. ठीक है? चलेगा? Everything good so far? ठीक है. Cool. 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 Thank you so much. हाँ, ठीक है. I will share the notebook. I will try to keep the notebook organized as well. But as I mentioned before, I try to go with the flow. So हाँ, थोड़ा हो दिक्कत हो सकता है कभी कभी, बट आई विल ट्राई टू कीप द नोटबुक ऑर्गेनाइज्ड एज वेल. सो हमने क्या देखा पहले, कंप्यूटर विजन होता क्या है, लाइक व्हाट इज अ कंप्यूटर विजन. So I will just rephrase it again. Computer vision is basically giving machine the capabilities, giving machine the capabilities of understanding images and videos. ए मेजर स्टफ है. आई मीन एट ए सिंगल लेमन टर्म्स से बात करना है तो ऐसा सोच सकते हैं आप. यू कैन मिक्स एंड मैच एनएलपी एंड नॉर्मल टेक्स्ट डेटा और टेक्सचुअल डेटा और टेबुलर डेटा एज वेल. बट मेजर काम होता है इमेजेस और वीडियोस के ऊपर. ठीक है? अगर अगर हम इसके एग्जांपल्स सोचेंगे तो लेट्स से आपके पास एक इमेज है, एंड इनसाइड दिस यू हैव मल्टीपल पीपल, and if you pass this image to a machine learning model which is built by using computer vision, you should be able to detect the faces, so which is like facial recognition. And you can say a banda person 1 hai, a banda person 2 hai, and you can do like object detection. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए पर्सन 1 यहाँ पे है, पर्सन 2 यहाँ पे है. So there are multiple things that you can do using computer vision. One of the example is facial recognition, object detection, और medical diagnosis. समझो आपने एक्सरे किया, and you pass this x-ray to the machine, and machine will analyze it for you in place of a doctor, and it will say okay आप अच्छा है क्या, healthy, if you are healthy, if you are not healthy. If you are not healthy, then what is the problem with it, by looking at the x-ray. There are so many examples that we can talk about using computer vision day to day life पे है, but ये सारे examples है. अगर मैं applications बात करूं, so एक कहाँ पे यूज होता है. So this will be like a minute, let me get me one more color. So let's take this one. Yeah, applications पे क्या होता है, let's say security मतलब क्या है. So समझो if you are driving on a highway and you are doing a over speeding, there are speed cameras that will capture your number plate and it will give you the tax and fine and all that stuff. So you can put video cameras and monitor and deploy computer vision models to track the vehicle speed and get the number plate and then do the fine and all that stuff. There are multiple fields like retail shops where let's say you have a huge warehouse, and inside this retail shop you can keep tracking of keep track of items by looking at the cameras.
and then you have agriculture field. In the agriculture field, you have drones which will analyze the crop health, how good the crop is going on based upon how much time it is happened, and how you can improve the health of the plants. So there are n number of applications and usages that we see in a day-to-day life using computer vision as well. So ये सब कैसे achieve कर सकते हैं? How does machines understand all of these things? So that is where we will learn all of these in the upcoming classes. Okay. So this is the high level stuff of computer vision. होता क्या है, उसका examples क्या है, and उसका applications किधर use होता है. ठीक है. And after like one more thing is like after like 15-20 minutes, I will just keep the chart open for like having any queries or not for 5 minutes, and then we will go with the next topic. ऐसे करते हैं हम, so that we will not disturb the flow of the class for other people as well. ठीक है. And because I am writing on the iPad, so I will be looking down in the video. So maybe it will be better for me to turn off the video itself. अगर कुछ दिक्कत होता है तो बताओ. अगर or else I will just keep it here. ठीक है. ये पहले चीजें होता है. एंड देन अगर इफ यू ऑलरेडी नो डीप लर्निंग के अंदर इफ यू हैव मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन्स, यहाँ पे वी हैव आर्किटेक्चर समथिंग लाइक दिस. ऐसे हिडन सेल्स होता है, एंड यू हैव कनेक्शंस लाइक हर एक को देर इज मेनी टू मेनी कनेक्शंस. ऐसे कनेक्शंस देखा होगा ना ऑलरेडी आपने. सो दीज आर ऑल useful for models data in which we have text, I mean tabular data. अगर आपके पास tabular data है, and you can do anything like classification task or regression task or any kind of task, and if the data is tabular data, it is highly recommended to use MLPs if you want to do deep learning, because it is good for these kind of tasks. अगर हमारे पास images है as an input, so images will be my input. ठीक है. So what kind of architecture I need to use? ये यूज कर सकते हैं क्या नहीं मैं? सो एट दिस टाइम पीपल कम अप विद अ सॉल्यूशन कॉल्ड कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स. इसको पहले वाले को बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, NN. I will write it a short form as NN. But when you have the data as images, scientists found out that instead of using neural networks, if you use some different kind of networks called convolution neural networks, these tend to work much better compared to MLPs. ठीक है. ये होता क्या है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स होता क्या है, एंड व्हाट एंड हाउ डिड दे बिल्ड दीज थिंग्स, एंड हाउ डिड दे अराइव फ्रॉम दिस MLP टू कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स, वी विल अंडरस्टैंड इन दिस सेशन. हमारा ब्रेन काम करते कैसे, लाइक व्हाट इज द इंस्पिरेशन फॉर साइंटिस्ट टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस. सो वो सारे थ्योरी हम आज के सेशन पे देखते हैं, एंड वी विल अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ इमेजेस होता क्या है. ठीक है. चलो. सो हमारा फोकस होगा अगले सेशंस पे. लाइक वी विल लर्न अ लॉट अबाउट कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स. वी विल सी हाउ टू build them and how they will work, and how to tweak them, and how to train them from scratch, and how to do a transfer learning. So there are n number of things that you can do on CNNs that we will learn with theory, and we will also do the coding part as well. So that would be a good learning curve for you guys. ठीक है. And then let's go to this one. Let's go to the next page. ठीक है. So now let's think about from the scientist perspective. Let's now we are in the 2024 era, in which in the last 2 to 3 years we have a lot of development happened in the fields of NLP or computer vision. But think about people who have been doing research from 1950, and they are doing research from 1950, and they are doing a lot of stuff to understand and how to incorporate images. And till 2012 there has been a lot of research, but it is not that much rapid. But since 2012 to 2020, I think 2020, there has been a very fast
adaptation or fast resource or research happened onto the computer vision side, and there has been a huge development because GPUs are much cheaper in this area and data became very large. As a first rule of thumb for deep learning is you should have good amount of data for you to train. वो training होता क्या है? Like when you have some input images, let's say input, and you want to build a machine learning model, you pass all of these images to machine learning model and it will try to understand इस पे होता है क्या, इसको बोलते हैं training. We will understand what is training in deep when we are doing the coding part as well, but at a high level you will try to teach the machine training hota kya hai, theek hai? And then because is area is time pe there is a lot of data populating and people are going crazy over storing the data, and they are having a huge amounts of data, and at the same time GPUs also become little bit cheaper compared to the pre era, and we have 32 GB, 64 GB, 128 GB, and I mean we have a lot of resources that made it very possible for researchers to do a lot of implementation onto the computer vision side in this area. And since 2020 we have GPTs, DALI, and a lot of stuff in 2024. This area is like too much fast. I mean even I will not be able to pick up, I mean if I am not following what is happening. I mean हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, like every day is a new thing, every day every week there is getting a lot of new papers, so it is a little bit hard, but the rapid growth that is happening is really good. ठीक है, अभी इस एरा पे, so how did people come up with the new network? So पहले होता क्या, we have neural networks, and as I mentioned convolution neural networks build किया है, ये कैसे build किया and how did they understand uh, to train these images onto the model, वो कैसे किया हम सोचते हैं अभी. So let's think about, यहाँ पे एक person है, ठीक है, and let's take it as human being. So whenever he sees something through the eyes, so let's say a image है, image one, and समझो यहाँ पे एक person है, and let's assume this person is brother of this human being. Okay, let's assume like scenario के लिए, and whenever this person sees this person onto this image, he will recognize this person as his brother, right? So that means he was able to predict or detect what is happening onto the image, and he was able to detect the face, and he was able to remember the name. So there are a lot of things happening in this single frame such that he was able to do a lot of stuff. And all of this is happening because we have an advanced thing called brain, and brain ke andar we have a lot of neurons that are working really hard to understand these things. So हमारा brain के अंदर बहुत सारे neurons होते हैं, and whenever you see or you try to do something, the neurons will talk to each other, and then they will do the activation, fire करते हैं, इसको बोलते हैं neuron firing. So at some times when you look at something, some part of the neurons will get fired, and they will transfer the information from one neuron to another neuron, and they will keep on doing into the lot of stuff. Even I don't know what is happening clearly, but neurons hota hai and they will be able to fire in some situations, and they will transfer the learning throughout the brain, and you will be able to recognize all of these things. So biologically एक brain का काम होता है. ठीक है, अभी what I will do is I will just open this one and visual cortex. एक minute. I will just open this human being brain visual cortex. I'll just keep it here. मैं यहाँ पे रख देता हूँ. Yes, images.
यस, ये देखो, ये थोड़ा थ्योरी हो सकता है आज का सेशन, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इंस्पिरेशन कहाँ से है डेटा साइंटिस्ट को, सच दैट दे विल बी एबल टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस. एंड यहाँ पे देख लो, if you look at this one, this image, I will just change the color. Yes. So if you look at this image, ये बंदे का eye है, and ये सारे information is being passed through neurons, and this backside part is called visual cortex. And is visual cortex is the one which is responsible for doing all of the visual stuff. ठीक है? So whenever you see something, sorry, all the information that is able to capture will be passed through all of these neurons towards this visual cortex, and this visual cortex will decide what to do, whether it is to recognize a task or it is to do something. जो कुछ भी विजन का रिलेटेड स्टफ है विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर काम होता है. ठीक है. एंड नाउ लेट्स लुक एट दिस वन. इफ यू लुक एट दिस वन, यहाँ पे देख लो, आई विल जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट. यहाँ पे देख लो, दिस इज लाइक मोर क्लियर पिक्चर. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और आई एम नॉट ए बायोलॉजी टीचर. जितना मुझे पता है मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे. सो यहाँ पे आपका आई है, एंड वेन एवर यू सी समथिंग, यहाँ पे न्यूरॉन्स इसे लेके जाता है, एंड यहाँ पे सारा विजुअल कॉर्टेक्स है. एंड इस विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर वी हैव मल्टीपल लेयर्स लाइक V1, V2, V3, V4, V5, and all of these layers are responsible for detecting something. Let's say maybe layer 1 will detect edges, or layer 2 will detect color, layer 3 will detect motion. I'm not sure ये सही पे करते नहीं, but each of the layer will try to detect what is happening inside what you are seeing, and then all of these layers मिलके it will bring you the information. So जैसे आप sky को देखते हैं, these layers will work together and say, okay, the sky is blue color and there are a lot of clouds and the aeroplane is going. So all of this information is processed on these things. वो कैसे प्रोसेस करते हैं एंड हाउ ब्रेन विल डू दैट, उसके लिए they have this experiment done, and I will talk about the experiment as well. एक मिनट. ठीक है. लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट. हाँ, ठीक है. अब तक कुछ डाउट्स वगैरह है क्या? इफ यू हैव एनीथिंग प्लीज लेट मी नो. प्लीज टॉक इन इंग्लिश. ठीक है, आई विल डू इट इन इंग्लिश इटसेल्फ, डोंट वरी. अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो. इफ जस्ट गिव ए गो अहेड और थम्स अप, एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द सेशन. हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? लाइक, इज माई ऑडियो एंड वीडियो क्लियर एटलीस्ट, वो तो बताओ. ठीक है. ठीक है, क्लियर. कीप गोइंग, कीप गोइंग. ठीक है, चलेगा चलेगा. कूल. हाँ, श्योर श्योर प्रतीक, आई विल डू इट. प्लीज टॉक इन इंग्लिश इटसेल्फ. सर, कैन यू डू अ लिटिल फास्टर? हाँ, ठीक है. आ, पहले दो, आई मीन जब तक आई विल ट्राई टू कीप माई पेस ए लिटिल बिट स्लो. वंस यू आर कंफर्टेबल विद द टॉपिक्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आई विल स्टार्ट विथ द फास्ट फ्लो, बिकॉज पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड होता क्या है, एंड व्हाट इज द व्हाई आर वी लर्निंग दीज थिंग्स. अगर if your foundation is not that much strong, so that is why I'm trying to keep my pace a little bit slow. And जो जिसने मेरा previous class attend किया, they know that I am little bit fast, but we will pick up the pace later on, so don't worry. जब जब हम प्राइमरी आई मीन इंपॉर्टेंट स्टफ सीखते हैं ना, वी विल स्टार्ट विद द गुड पेस, सो डोंट वरी. सो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है डेटा साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने. So I will just show, I will give you the link to this one and all that stuff available after the session itself. So don't worry about all of this stuff. So यहाँ पे हम मैंने क्या डिस्कस किया, we have the visual cortex, and यहाँ पे multiple layers होता है. and अभी ये एक्सपेरिमेंट क्या किया साइंटिस्ट ने, यहाँ पे एक बिल्ली को ले लिया. लाइक they have taken one cat here, and they have sedated the cat. What is the meaning of sedation? They have given the anesthesia such that the cat will not move and cannot move, and they have connected some kind of experimental rods
onto the brain of the cat. And they are doing this experiment on the cats because doing experiments on human beings is illegal. Hopefully it is illegal still now. So पहले they started doing experiments on animals. So यहाँ पे किया क्या, they fixed the rods here, and oh, cat ka, they fixed the rods in the visual cortex of the cat, and the cat is sedated and cannot move. And if you look at this one, this is a huge screen, and most of that background is fixed. And at the middle of this one, they have one bar of light. So it is like an edge. So assume this is an image or background. यहाँ पे एक light है. So it is just like a edge. ठीक है? And they keep on rotating this one, rotating the edge. अभी हुआ क्या है, whenever they are noticing the signals of the neurons, यहाँ पे what this rod will do is it will try to record the activations of neurons. So what they're trying to see is if they are rotating this bar of light, whether or how the neurons are firing up inside a cat's brain. And they notice some very interesting cheese, which is like, give me a minute. See, if you look at this one, if the bar is horizontal, almost none of the neurons are fired. There is no response actually. And if the bar is vertical, they get some kind of response here. Response matlab activation. Okay? When neuron, so what happens with neurons is they will get activated and they will produce some electrical energy. So they are reading this electrical energy. Okay? So यहाँ पे the outcome that they came to here is there are some part of neurons in which they are only active for some kind of light shapes. So यहाँ पे these part of neurons are only getting fired up when they see an vertical edge. And there are almost zero parts of neurons where the rod is connected. They are not activated if they see a horizontal edge kind of image. So यहाँ पे conclusion क्या होया कि whenever you see something, pehle they will try to understand whether there are edges or not, and based upon what kind of shapes that you are visualizing, there are multiple parts of neurons that keep on activating for multiple information techniques. ठीक है, ये लिया, and then they decided that these activations are responsible for increasing the and getting the value out of it. यहाँ पे एक मिनट. सो यहाँ पे हमने ये लिया ना, सो विच इज लाइक ह्यूमन ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स देखा ना. सो यहाँ पे ये क्या बोल रहे, there are multiple neurons in which each of the layers are responsible for detecting edges, detecting motion, the lot of stuff. So मेरे पास एक PDF है, मैंने PDF डाउनलोड किया. I will also share the PDF with you guys as well, don't worry. So this is the research paper actually. So if you look at this one here, यहाँ पे they clearly mentioned that in the visual cortex, V1 is almost responsible for detecting motion. V2 layer is detecting stereo, and V3 is color. V3A is texture segmentation, and all of these layers working together will give you the information. Okay, that is how a human brain visual cortex works. So pehle they will try to understand the edges because of the neuron activations, and some of the neurons are responsible for detecting color. Some of the neurons are able to detect motion, stereo, and they mix the information from all of these visual layers, and then they will pass the information to the brain. Okay, that is how a human brain works. And यहाँ पे they also find something interesting, which is if you look at this image. So if you look at this image, let me zoom out a little bit. Yes. So if you look at this image, यहाँ पे एक fish है, and these are multiple layers, V1, V2, V3, V4. There are multiple layers. And whenever a human brain sees this fish image,
it will pass to the first layer, and यहाँ पे कुछ तो detect हो रहा है. So what all of these things we will learn later, but assume that maybe V1 is responsible for detecting edges, and whatever the information that is gathered on V1, it is being passed to V2 and V4. And यहाँ पे maybe it is detecting color, यहाँ पे कलर हो सकता है, एंड बोथ ऑफ दीज टुगेदर इट विल पास इट हियर. इस लेयर पे मे बी डिटेक्टिंग शेप्स, and यहाँ पे at the end it is detecting as fish. So what is happening here is, for every layer there is a hierarchy to it. So each layer learns something new, and all of these information is being carried forward to the other layers, and at the end it was able to detect it was a fish. So that is how a human brain usually works, and they got this conclusion by doing all of this research. Now this, they came to the conclusion that, let me give you the key points so that it will be easy for you to understand. So key takeaways क्या है? Key takeaway, so पहला takeaway है कि multiple layers in visual cortex, ठीक है, and each layer is responsible for, give me a minute, why is it little bit laggy क्यों हो रहा है? for different prediction. एंड सेकंड चीज है कि देर इज हायरार्किकल क्लस्टरिंग, हायरार्किकल रिलेशन बिटवीन लेयर्स, ठीक है. एंड थर्ड वन इज all of these layers information from layer 1 to layer 2 to layer 3. So all of this is being carry forwarded to layer n, and this will be able to detect the thing. It could be anything, detection हो सकता है, it could be motion हो सकता है, it could be anything. So these are all the things that they were able to conclude. अभी साइंटिस्ट का चीज है कि now how can I replicate this process in teaching the machines. machines को कैसे replicate करूं मैं ये process, that is also another stuff है ना. So now for this replication of the topics onto these machines, they started to build something called as convolution neural networks. Hopefully that is clear. Ah, ठीक है. Please keep marker thickness to thinner. अच्छा ठीक है, I will give it little bit thin. हाँ ठीक है. अब तक the history हो गया almost. So did how did you? I mean, is it interesting or how is it? Please let me know once. एंड ये कैसे किया, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स होता क्या है, हाउ टू फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल, सो डोंट वरी. कैसा लग रहा है अब तक? ठीक है. प्लीज कीप मार्कर थिकनेस टू थिनेस्ट ऑन व्हाइट बोर्ड ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है. प्लीज गो स्लो बिकॉज सम ऑफ दिस आर न्यू. ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट, कूल. ठीक है. अभी आई विल जस्ट रिफ्रेश व्हाट वी हैव लर्न सो फार. सो पहले वी हैव सीन व्हाट इज कंप्यूटर विजन, and what are the examples of computer vision, and what are the applications of computer vision. And then we have learned the difference between, I mean, what is the need of convolution neural networks, a hota kya hai, we will learn it later on. And we have seen a little bit of history on like progress of vision in the past 50 years. And then we have seen how a human brain works, and then from the research that they have done, what are the key takeaways from this research. SRA हो गया, and that led to people building convolution neural networks, ठीक है. So this is the whole history of CNNs. अभी हम क्या करते हैं, because we are dealing a lot with the image data, let's understand what is an image, ठीक है. And then the, इसके बाद we will see what to do.
सो इमेज होता क्या है? सो लेट्स गो विद दिस वन। सो लेट्स से मेरे पास एक इमेज है। आई विल जस्ट ड्रॉ एन इमेज लाइक दिस, and it could be something on this image, but image is like a group of pixels. So pixel क्या होता है? In this image there are multiple छोटे छोटे blocks होता है. Let me draw a little bit here. I'll just draw it like this. ठीक है? And I will just draw it like this and this one. So let's assume this is an image. ठीक है? And it could be of any shape of the image. So shape होता क्या है? Shape is basically how many pixels that are present in the row and in the column wise. ठीक है? And pixel होता क्या है? So each block is called a pixel. Each block को pixel, we call it as pixel. And there are multiple pixels, and all of these pixels brought together will become a single image. And this each pixel will have their own color, and all of these pixels added together will form an image with a RGB color image. But at a high level, if you talk about an image is consisting of a group of pixels, and each pixel has its own color, and the number of pixels depend on the quality of the image. I mean, so the quality of the image, so I will write it here. Quality of image depends on how many number of images, how many number of pixels actually. So if you have very huge number of pixels, even if you zoom the image, you will look at the pixel level, it is very clear. So अगर आपका pixels ज्यादा है, then आपका quality of the image बहुत अच्छा है. It is recommended to have a high quality images as usual basically. And यहाँ पे it, as I mentioned before, every pixel has its own color, and these colors can be from any color spectrum actually. And it could be black and white as well if you have black and white images. So let me just Google here. I will just huh, pixels and images. Let's go to this one. If you look at this one, so समझो यहाँ पे एक बड़ा image है, and this image is basically a lot of smaller pixels combined together. And if you look at one particular instance, so this is the color of one pixel, and by having color of every pixel and adding side by side, you will make the complete picture. ठीक है? ऐसा होता है usually. And there are multiple stuff. If you look at this one, this is a complete pixel image itself, and it is not that much clear. So if you have larger number of pixels, you have the better clear and quality of the image, and it is highly recommended like that. And ये होता है इमेज, हर एक इमेज ऐसे है, जो कुछ भी इमेज ले लो आप. So let's say शाहरुख खान image. I mean, I'm just taking an example. Shahrukh Khan image. So if you look at this one, so this image also is from a lot of pixels. So each of the pixel is having this pixel is having black color, this pixel is having gray color, this pixel is having brown color. So every image is consisting of pixels, and every pixel is having multiple colors actually, and all of this combined together will form an image. ठीक है, ये हो गया pixel होता क्या and all that stuff. And then the second part, which is like in terms of uh, programming. Programming पे there is two types of images. One is grayscale image, and other one is RGB image.
ठीक है. So if you look some diagrams, so I will just show you one diagram and उसके बाद we will talk about that. And यहाँ पे ऐसे दिखा होगा आपने. अगर if you don't know, I will explain all of these things. So let's say if you have one image like this, and let's assume this is okay, let's take this one, and let's assume there are multiple pixels like this, and let's assume it is of 300 by 300. So what is 300 by 300 here? Number of pixels in rows and number of pixels in columns. So अगर आपके पास एक इमेज पे 300 हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स एंड 300 वर्टिकल पिक्सल्स है, इसको बोलते 300 क्रॉस 300 इमेज. एंड if all of these pixels color is in gray, this is the color. अगर आपके पास सारे इमेजेस ग्रे कलर पे है, देन इट इज 300 क्रॉस 1 बोलते हैं. इसको बोलते हैं चैनल. एंड अगर if your image is gray, the number of channels is always 1 because all of the pixel values are same. I mean gray color का ये. अगर if you have multicolor image, so I will just show you this one, grayscale image. So let's click on this one. If you look at this one, so these are all called grayscale images, and we have one more images which is called RGB images pixels. Like let's do like this. So channels, yes. So ARGB बोलते हैं, colorful images बोलते हैं. So let's say we have this image which is parrot. अगर इस पैरेट को बनाने के लिए हमने क्या देखा, वी नीड टू हैव लॉट ऑफ पिक्सल्स एंड ईच पिक्सल विल हैव द ओन कलर, राइट. अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आरजीबी इमेज विच इज कलरफुल इमेज, यहाँ पे सिंगल इमेज जैसा नहीं रहता है. सो व्हाट विल हैपन इन द बैक एंड इज, फर्स्ट वी हैव दिस इमेज एंड लेट्स अज्यूम इट इज अ कलरफुल इमेज. ठीक है. अभी बैक एंड पे क्या होता है, it will have, let's assume it is of shape n1 cross n2. I'm just taking some examples. So it will split into 3 segments, which is the same n1 cross n2, the second one also n1 cross n2, and third one also n1 cross n2 shape. Same the shape रहता है, but the color of the pixels in the first layer is different compared to the color of the pixel in the second layer. So यहाँ पे first pixel ले लो, यहाँ पे first pixel ले लो, यहाँ पे first pixel ले लो. These 3 colors are different actually. And if you stack all of these 3 layers one on top of other and mix together, if you look at all of these 3 channels together, then that will be forming this colorful image. So इन तीनों channels को बोलते हैं हम red channel, green channel and blue channel. ठीक है. I will show you this example here and I will talk about that. So यहाँ पे we have the input image which is a parrot sitting on a branch of tree. अब इसको बनाने के लिए we split this into 3 images which is of same shape. यहाँ पे shape same है. We are not cropping, we are not reducing the pixels. But if you look at these, let's assume the pixel at here. So this pixel color is in red, this pixel color is in green, and this pixel color is in blue. And if you stack all of these together, you will be able to see this one. ठीक है. इसको बोलते हैं R, G and B. Red channel, green channel and blue channel. So इसको बोलते हैं channels. So how do you represent a colorful image in Python or in coding language पे क्या होता है, whenever we have an image. So let's assume this is an image with shape n1 cross n2. And if the image is in grayscale image, grayscale पे we don't have this RGB formats. इसको final shape होगा n1 cross n2 cross 1. A 1 मतलब only one channel. There are no channels actually. ज्यादा channels नहीं है, one channel.
अगर इफ द इमेज इज कलरफुल इमेज, इसको विल कॉल द शेप एज n1 क्रॉस n2 क्रॉस 3। यहाँ पे 3 क्यों? वी हैव R, वी हैव G एंड वी हैव B। रेड, ग्रीन, ब्लू, all of these channels stacked together, we call it as a colorful image. I know this is little bit hard to digest for the first time, so I will just take 2 to 3 minutes for if you have any queries so far, and please let me know. I will be I will be reading the chart right now for the next 2 to 3 minutes. If you have any queries, please let me know so that I can clear the doubts. If everything is clear, please let me know that as well. Clear. No. Okay, sir. How depth are we going to in computer vision? We are going little bit depth actually. Okay. What does pixel exactly is? TK. What is N1 and N2? Clear. Okay. I will talk about that again. So channel does not mean gray color. No, yes, okay. You can define channel once. Okay. Only cover CV or deep learning in this course. We are only going to cover CV. Clear here. Some same color means grayscale. Why the name channel? Does the image have two channels? One does the image has two channels, 1 and 3. It means any color, everything is good, sir. If the color is red, whole image is red channel. Yes, can we have? Okay. So there are multiple things. I will just rephrase it once again so that it will be easy for everyone to understand. So यहाँ पे एक इमेज समझो. I will just briefly rephrase it बस, ठीक है? And the image is formed by a group of cells. ठीक है? इस सेल्स को बोलते हैं पिक्सल. सो पिक्सल होता है क्या है? इट इज वन पीस ऑफ द इमेज विच इज कॉल्ड एज सेल. उसको पिक्सल बोलते हैं. एंड इफ यू एड अ लॉट ऑफ पिक्सल्स इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इमेज. ठीक है? एंड यहाँ पे लेट्स अज्यूम there are 1 2 3 4 5 6, there are 100 pixels here, and यहाँ पे let's assume there are 100 pixels here. सो दिस इमेज का शेप बोलते हैं 100 × 100. ठीक है? बिकॉज देर आर 100 पिक्सल्स इन द रो वाइज एंड 100 पिक्सल्स इन द कॉलम वाइज. एंड एज वी हैव लर्नड, इमेज होता है दो टाइप तरीका का. वन इज ग्रे स्केल इमेज एंड वन इज कलरफुल इमेज. अगर कलरफुल इमेज होता तो वी हैव 3 चैनल्स. सो चैनल मतलब क्या? चैनल मतलब कुछ भी नहीं है, एक इमेज है. एंड वी आर कॉलिंग द शेप n1 क्रॉस n2. यहाँ पे n1 इज एनी नंबर. यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे 100 है, n2 इज ऑल्सो 100 है. आई एम जस्ट फॉर जनरलाइजिंग n1 क्रॉस n2 लिखा. वी हैव 3 डिफरेंट सेट ऑफ इमेजेस. ईच शेप इज n1 क्रॉस n2, n1 cross n2, and all of these are images itself, but the colors will be in a single monochromatic. जैसा ए आर है, ए जी रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है एंड ब्लू कलर है. इस तीनों इमेज को हम बोल रहे चैनल. इट कुड बी एनी नेम बट पीपल आर कॉलिंग इट एज चैनल्स. सो फाइनल शेप वुड बी, अगर हमारे पास एक कलरफुल इमेज है तो we have 3 channels, red, green and blue. उसके बाद so इसके हम बोलते हैं n1 is basically number of pixels in the horizontal, I mean rows, and n2 is basically number of pixels in the vertical thing, and this third one is channel C, which is like how many channels that we have. Usually a colorful image पे 3 channel होता है. I don't know about multiple channels, but आगे when we are learning this architecture and all that stuff, you will see the multiple channels as well. But I don't visually understand वो कैसे होता है. But at a high level 3 channels ही होता है. ठीक है? If red color visible in combination of RGB layers, so it means value or intensity of G and B layers is less. that is correct, हिमांशु पांडे. ऐसा भी होता है. Are we okay? In grayscale, only channel if there is gray, so image always looks gray only, right? Yes. In grayscale, there is only one channel, so image will always look. Sorry. Will always look gray only. YOLO and fast RCN will you cover? We will be covering YOLO, I guess. But not in depth. But we will not. I mean, we will cover object detection all this stuff, but I will not go with that right now. ठीक है? Hopefully everything is clear so far. So हमने क्या क्या cover किया? Let's go through it once again here. कंप्यूटर विजन वगैरह देख लिया हमने, MLP देखा,
and images का देखा, and history of this one देखा, and then we have how a human brain works and how the multiple layers are present inside human brain, and how they were able to come to the conclusion that there are hierarchical relation between the layers, say, and each layer is representing something, and then they are detecting something. And then we have started to learn about images hota kya hai, and what are pixels, and we have seen grayscale images and RGB images, and then TK number of pixels. Okay, cool. And then we have seen the this one. Okay, now let's take an example. So let's go to this one. I usually use for learning, I will always use Google. Google is one of the best resources, and I would highly recommend everyone to use Wikipedia as well, because वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा रिसोर्स मिलेगा आपको फॉर लर्निंग पर्पस। अभी हमने देखते, लेट्स सी पिक्सल वैल्यूज इन आरजीबी इमेजेस। हाँ, अभी ये देख लो, इमेजेस पे जाते हैं। सो आई यूजुअली डायरेक्टली गो टू द इमेजेस बिकॉज इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विजुअली। इफ यू लुक एट दिस वन, यस, सो अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स गो थ्रू दिस वन। समझो हमारे पास एक इमेज है। सो दिस इज एन इमेज, and let's assume there are only 5 by 5 pixels. 1 2 3 4, I mean 6, let's take it 6 by 6. ठीक है, 6 by 6 क्यों? यहाँ पे पिक्सल 1 2 3 4 5 6, दैट इज बाई यहाँ पे n1 6 होता है, एंड 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 है। For all the examples that I am taking so far, we have seen only, I mean, there are a lot of messages. Give me a minute. Give me a minute. Okay. Will the classes will be taught in PyTorch or TensorFlow? Hope it is in PyTorch. It is not in PyTorch. I usually prefer CV and Keras, but देखते PyTorch भी cover कर सकता है क्या नहीं. And if you have only one channel, it may be any color of RGB. We have colored channel. I mean, ऐसे भी हो सकता है. Navad Jyoti, we might have different only one channel as well. Can we directly convert black and the white image to colorful image just by using OpenCV? Yes, we can convert it. OpenCV पे कुछ, I mean, we can do a lot of stuff in OpenCV. An image can have maximum of 3 channels, right? I mean, जितना हमें पता है शायद 3 channels ही होगा. Pixel is the smallest unit or building block of image. Yes. Satellite image have multiple channels like NIR and SWR. I'm not sure about Depali. I need to check it out. ठीक है, चलो. So यहाँ पे 6 by 6 image है. There might be images which is like, let's say, like this. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3. So यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 cross 4. So images can be of any type of shapes. It could be a square. It could be a rectangle. It could be any kind of हो सकता है. हम usually whenever we are learning things, we try to learn from the example of square images, because बहुत सारे mathematical calculations वगैरह easy हो जाता है. Like it will be very easy for you to understand the things, and we can apply the same things on the rectangular image as well. But we will prefer using square images. ऐसा नहीं है कि we cannot do anything on rectangle images. We can do everything. जो कुछ भी हम square पे कर रहे हैं, we can do it on rectangle as well. ठीक है, and let's assume we have only one channel. Let's assume it is a grayscale image. ठीक है, and it is a square shape of 6 by 6. Now what I wanted to talk about is, every part is known it as pixel, right? And if, as we mentioned before, every pixel will have color. ठीक है, but every pixel color होता है, but how will machine understand color? So ये कैसे करते हैं?
सो इसके लिए लेट्स अज्यूम इट इज ऑफ वाइट कलर और ब्लैक कलर, ठीक है। सो व्हाट वी डू हियर इज वी डू ए कोडिंग टेक्निक. So whenever you see a pixel here, this pixel will have a numerical value, and this value is in the range of 0 to 255. ठीक है। अगर समझो आपने एक इमेज देखा, सो लेट्स से दिस इज द होल इमेज and you have converted this image into an array. ठीक है, array मतलब you have numbers actually, because in machine can only understand numbers, right? It cannot understand color, it cannot understand anything. So यहाँ पे हर एक पिक्सल होता है, हर एक पिक्सल को एक वैल्यू असाइन किया हमने based upon the color of the pixel, and this value can be from 0 to 255. ठीक है। if you look at this one कैसे होता है, I will show you this. So if every pixel can have values ranging from 0 to 255, and by default if I remember correctly, 0 is black and 255 is white. So let's assume वहां हमारे पास ये इमेज है. Let me get one more color here. हाँ, सो यहाँ पे देख लो, ये सारे पिक्सल्स सोचा ना हमने, एंड लेट्स अज्यूम द वैल्यू ऑफ दिस पिक्सल इज 0 0 0 0 0 0. दैट मीन्स all of these pixel colors are of black. एंड अगर इसका पिक्सल का वैल्यू 255 है, 255 है, 255 है, 255 है, 255, 255, so this whole row is in white color, a whole row is in black color. So and अगर इसका वैल्यू होता है 150, इट कुड बी एनी अदर कलर. आई डोंट नो द एग्जैक्ट कलर, कलर कोडिंग क्या है, एंड इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर यू टू रिमेम्बर दोस थिंग्स. मैं ये बोल रहा हूँ कि हर एक पिक्सल को एक वैल्यू रहता है, एंड दैट वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 255, एंड 0 is basically black color and 255 is basically white color, and if you have any other color उसका अलग नंबर हो सकता है. So that is how an image forms. So to understand this clearly, so let's assume मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम इट इज ए 6x6 इमेज, एंड यहाँ पे आधा वाइट है एंड आधा ब्लैक है. So let me fill it up with white. ठीक है, let me just fill it up like this. ठीक है, ये मेरा 6. There are a lot of people talking about it. Okay, OpenSea yes, OpenSea will be thought in this one. अच्छा योर ओके, हमारा बंद हो गया, ठीक है, डोंट वरी. One channel means grayscale and three channel means RGB, colorful. Yes, harmony. Would it be 4x7 and so? Oh, sorry, it is my mistake. It is 4x7. Sorry. uh, वो पेंसिल विल बी थॉट इन दिस. यस यस, ठीक है. चलो ठीक है, हमारा पास ये इमेज है, 6x6 इमेज है, एंड यहाँ पे ऊपर आधा पार्ट है विच इज इन वाइट कलर, एंड आधा पार्ट है विच इज इन ब्लैक कलर. अगर आई वॉन्ट टू रीड दिस इमेज इन, लेट्स से पाइथन पे रीड करना है, सो हाउ इट विल लुक लाइक. सो व्हाट इट विल डू इज, हर एक पिक्सल होता है, so we will just convert this 6x6 image into pixel. So 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5. ठीक है, now we have seen that अगर 255 वैल्यू है तो वाइट है, 0 मतलब ब्लैक है ना. सो ये सारे ब्लैक, नीचे पोर्शन ब्लैक है ना. सो ऑल ऑफ दीज वैल्यूज विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा होता है, एंड ऊपर का वैल्यूज होता है 255.
255, 255. ऐसे लिख लिया मैंने so that understand that ये थोड़ा lazy है. So whenever you see a 6 by 6, I mean if you talk about image shape, वो बोल सकते हैं, sorry, and you can talk it in terms of arrays as well because everything is in array in Python. अगर if you see a array of numbers like this, which is आधा तो है 255 and आधा तो है 000, that means मेरा image is something looking like this. So whenever you load a image onto Python, it will be converted into these numbers. Okay, कभी कभी माइनस नंबर्स भी रहता है, बट इतना ध्यान पे रखने का चीज नहीं है वो एक्चुअली. सो यू हैव द बेसिक थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर इज whenever you see an image, if you load that image onto the Python, it will be in the array format such that every pixel will have some numerical value. अगर यहाँ पे ग्रे स्केल इमेज होता, ग्रे स्केल इमेज, देन इट विल बी ओनली दिस वैल्यू. यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने, 36 एलिमेंट, 36 पिक्सल्स है. अगर इफ इट इज ए ग्रे स्केल इमेज, देन आई विल ओनली हैव 36 एलिमेंट्स इन माय array. अगर इफ दिस इज एन कलरफुल इमेज, कलरफुल, that means it will have 3 arrays. यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, एंड एवरीथिंग इज 6 by 6, 6 by 6 एंड 6 by 6, एंड हर एक पिक्सल को वैल्यूज रहते हैं इस ये सारे ब्लॉक्स पे. ठीक है, एंड ऑफ ऑफ दिस नंबर ऑफ पिक्सल्स कितना है, 6 x 6 x 3. सो टोटल कितना है, 36 x 3. 36 x 3 मतलब, हाँ, विच इज 108 पिक्सल्स, 108 पिक्सल्स. ठीक है. So if you have a image which is of shape 6 by 6, and if you convert it into the Python array, you have 36 elements, because it is, if it is a grayscale image, and you have 108 pixel or 108 elements if you have a colorful image. Hopefully that is clear. अभी हम क्या करते हैं, we will try to take Google Colab use. I mean, I hope everyone knows about Google Colab, and we will try to use or load one picture onto the Google Colab, and we will try to see the values. ठीक है, so that everything is clear. If you have any queries, please let me know in the chat. मैं because ये सारे I mean, these are all the things that you need to understand as the foundations or basics. Some might be thinking ये क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं. I mean, don't think about like that, because there are people who don't know all of these things, right? I want to go from the scratch. I want to build the foundations as strong as possible, such that बाद में if you need to tweak a lot of stuff, you will be comfortable doing all of those things. ठीक है, so अभी हम क्या करते हैं, let's go to Google Colab. Google Colab is an environment where we can do the coding. I hope most of them knows. Your way of teaching is good. ठीक है, good, thank you. Try this to understand colors and channels. Sure, that will be great. Yes, RGB channels. Yes, this is a really good tool. Thank you, Vishal. If you look at this one, I mean, you can just pick up the, I mean, these are the colors. You can just look at it for yourself. You can just do it. Please summarize from the beginning what has been covered. Yes, I will summarize. Don't worry. 9. Shall we use Jupyter Notebook? Yes, we can use Jupyter Notebook, which will be study properly various models architectures. मैं बताता हूँ सारे. So I will not deviate from the topic because बहुत सारे लोग हैं इस पे. I will not focus on the queries of people. यस श्योर, ओके, ठीक है. सो वी कैन यूज जुपिटर लैब एज वेल, ऐसा कुछ नहीं है. आई प्रिफर गूगल कोलैब क्योंकि इट विल यूज गूगल्स ओन रिसोर्सेस, सो इट विल नॉट पुट प्रेशर ऑन माय मैकबुक. Although it is, I am having MacBook, I use Google Colab. It will be easy to not set up anything. You can just click on one button and everything will be done. And I mean, I will use ChatGPT a lot of time, so you can use that as well. So it is fine.
So I don't remember the code actually, but I will just use ChatGPT. But you should be in a position to debug whether what ChatGPT is giving, whether it is good or not. ठीक है? So हम क्या करते हैं? Read an image in Python and print its values. सीधा कोड देते हैं, ओपन सीवी भी ले सकते हैं आप यूजुअली डायरेक्टली. सो हम ओपन सीवी से करते हैं. ठीक है, आई विल जस्ट डू इट हियर. आई एम जस्ट डूइंग लाइव ऑन द कोड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. सो अभी हम कनेक्ट करते हैं इसको. लेट्स कनेक्ट इट. कनेक्ट कर लिया एंड लेट्स डाउनलोड वन इमेज. लेट्स डाउनलोड शाहरुख खान इमेज. And then let's go to the images section and let's download this image. Save image as. इसके अंदर शाहरुख इमेज. ठीक है, डाउनलोड हो गया हमें. सो लेट्स अपलोड इट हियर. डेस्कटॉप कैंपस एक्स शाहरुख इमेज डॉट जेपीजी एंड लेट्स कीप इट हियर. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट इंपोर्टिंग कंप्यूटर विजन. सो आई विल जस्ट डू इट हियर. ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया. सो दिस इज सॉरी, सीवी ओपन सीवी इज अ पैकेज वेयर यू गेट अ लॉट ऑफ विजन capabilities. We will learn a lot of things regarding computer cv as well, but right now let's do cv2.imread. so यहाँ पे क्या कर रहे हैं? imread is like we are reading image. so यहाँ पे what we need to do is we are reading the image of this image जो हमने upload किया. so I will just copy path. so I will just paste it here. so and then I will just do it here. हमने ये एग्जीक्यूट किया एंड इट गॉट एग्जीक्यूटेड. मे बी आई विल जस्ट डू इट अ लिटिल बिट zoomed वर्जन. इट विल बी इजी फॉर यू टू क्लियरली सी. अभी हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमने इमेज को रीड कर दिया. हाँ, शिट. सो यहाँ पे इमेज को रीड कर दिया. नाउ लेट्स प्रिंट द इमेज. अभी ये देख लो. सो लेट्स प्रिंट द शेप ऑफ द इमेज फर्स्ट एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट लेटर ऑन. If you look at this one here, हाँ, so let's talk about this. So यहाँ पे हमने इमेज को रीड कर दिया. what is happening? Yes, give me a minute. Yeah, हाँ. I think there is something lag happening here, but ठीक है, I will just do it like this. ठीक है. So यहाँ पे हमने एक इमेज को रीड किया OpenCV यूज करके. and if I print the shape of the image, it is 255 cross 225 cross 225 cross 3. so जैसे हमने यहाँ पे सीखा, if you look at this here, यहाँ पे इमेज है 6 cross 6. क्या हो रहा है यार? एक मिनट. Why is it happening like this? Sorry yaar, give me a minute. Something is weirdly behaving. Let's go here. ठीक है. And यहाँ पे 255 cross 3, that means there are 255 pixels and 255 pixels and 3 channels. ठीक है. Because the image that we download is in colorful image, it has 3 channels. If you look at the code here, yes, 3 channels RGB के लिए. अभी हमने क्या देखा? Every image has 3 channels and every channel has pixel, right? If you look at this one here, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है? Because if you look at here, we have 3 channels, right? So all of these 3 channel images are stacked on together like this. Let me go to the blackboard again. एक मिनट, let me close this and open my good notes. कुछ तो weirdly behave कर रहा था. Just give me a minute. Yes. हाँ, यस. सो अभी हम क्या करते हैं? हाँ, यहाँ पे शाहरुख खान का इमेज आ गया हमारा. शाहरुख खान इमेज. ठीक है. यहाँ पे 225 क्रॉस 225 क्रॉस 3 है. दैट मीन्स 3 चैनल्स है. सो हमने क्या सोचा? दिस विल बी लाइक 3
images, and every pixel has values. So हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, you take this pixel value, let's assume this is 10, you take this pixel value which is 10 and you take this pixel value, let's say 15, यहाँ पे एक array पे लिख लो, and then you take the next pixel value and you keep it in 12, let's assume like that, and यहाँ पे second pixel value, let's assume 15, and यहाँ पे next pixel value, let's say 18, and then take the next one. So likewise all the three channels RGB channels को एक ऐसे array पे represent करो, and for all of these 255 values 225 values you represent in multi sub arrays. So representation कैसे होता है यहाँ पे देखो. So these are value from R channel, G channel and B channel for one pixel, and this is for second pixel and this is for third pixel. जैसे पूरा इमेज का रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली यहाँ पे. सो विच इज लाइक 225 क्रॉस 225 क्रॉस 3. So that is how an image will look like inside a Python. Sir, okay. Okay, give me a minute. We will study properly about various model architectures. Yes, we will study about the architectures. So if computer only knows values, not color, then how do we explain the color channel to the computer? So इसलिए we have kept three different channels, right? So this is how it is saying. यहाँ पे तीन different channel है, and if you look at this here, this represents it is having three channels. It's a multiple three-dimensional array है. So that is how computer will know ये एक 3D image है, I mean colorful image है. What are black and white images? It is different from grayscale images. Black and white images are same as grayscale images. I think yes. Sir, what लैपटॉप के बारे में बाद में बात करते हैं at the last 5 minutes पे. So what is OpenCV? That is a good question. Okay, let me talk about that. Grace approaches are developed OpenCV purpose. Okay, so OpenCV होता क्या है? That is also that is one thing. OpenCV. Okay, let's click on that. OpenCV is a library just like Python पे आपके पास PySpark, Keras बहुत सारे libraries रहते हैं ना. So जैसे OpenCV भी एक पैकेज है और बड़ा लाइब्रेरी है एक्चुअली, which is open to all, and this is for computer vision के बारे में. ठीक है, यहाँ पे you get all the capabilities of vision things. Let's say इमेज को रीड करना, वीडियो फीड को रीड करना, राइट करना, और मे बी यू वांट टू डू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ. यहाँ पे OpenCV के अंदर पैकेजेस रहते हैं. OpenCV ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लेट्स से object detection, OpenCV documentation. So OpenCV is a bada package in which you have that multiple packages for the tools that are used for computer vision. जो कुछ भी हो, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एक पैकेज है, सीधा डिटेक्ट कर सकता है एक्चुअली. यू कैन लुक एट द कोड हियर. कैस्केड क्लासिफायर का नाम पे एक है, एक क्लास है. You can import this class and you can directly do object detection actually without knowing anything. सीधा पैकेज उठा के you can use the class. So OpenCV is a package similar to pandas or some sklearn or scikit-learn, कुछ भी है, which is mostly focused towards computer vision things. Sorry. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक इमेज लिया एंड वी कैन डू दिस. नाउ हम क्या करेंगे, एक कलरफुल इमेज है. In one of the person, I think person asked about can we convert grayscale to colorful and colorful to grayscale. So अभी हम क्या करते हैं, so let's do convert RGB image, colorful image into grayscale image. Colorful image into grayscale image. See, आज के लिए मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, बट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशंस आई विल कीप माय कोड रेडी so that it will be easy for you to sorry it will be easy for you to follow actually with ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आज थोड़ा लाइट. सॉरी, ये क्या हो रहा है, दिस इज टू मच ऑफ कोड. इतना नहीं होना चाहिए. कुछ कभी कभी बकवास देते हैं, बट ठीक है. यूज OpenCV to convert
color image into grayscale image, Python code. हाँ, अभी ये देख लो, ये ले लेते हैं हम. सो लेट्स गो हियर बैक टू द कोड हियर. सो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू रीड अवर इमेज, राइट. सो हमने ये रीड कर देते हैं. And whenever you don't know anything, I highly recommend you to read the documentation page. So अभी कैसे documentation page कैसे read करने बताता हूँ. Today, because it is first class, I am trying to explain everything in detail. Open CV, cv2.imread. ऐसे करो cv2.imread. ऐसे करो, you will get the documentation page. A documentation page है actually, okay. OpenCV documentation. You click on it and you read these things and you understand ये class क्या होता है, कैसे यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है. You can understand everything about IMRead करते क्या है. So it will be easy for you to learn a lot of stuff by reading the documentation page. ठीक है, ChatGPT is good tool, but I don't want you to rely on tool completely. So अभी मैं copy paste कर रहा हूँ. I don't want you to do copy pasting while using ChatGPT. आप अगर आप ChatGPT यूज कर रहे हैं, जो कुछ भी tool यूज कर रहे हैं, I want you to type everything. Let's say do like this, image equal to cv2 dot IMRead. ऐसे किया तो you will be able to adapt to the coding techniques. ठीक है, don't just copy paste. I don't want you to copy paste. ठीक है, यहाँ पे हमने रीड कर दिया फिर से शाहरुख खान इमेज को. एंड देन इसको हम क्या कर रहे हैं, देर इज दिस फंक्शन विच इज लाइक cv2 डॉट cvt कलर. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा इमेज को कलरफुल से ग्रे इमेज बना रहा है. वी जस्ट कन्वर्टिंग द इमेज इनटू ग्रे स्केल इमेज. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड एंड ये एग्जीक्यूट हो गया. नाउ लेट्स प्रिंट दिस ग्रे स्केल. एंड इस अभी देखो, अभी लुक एट दिस वन, दिस इज रियली गुड एक्चुअली. इफ यू लुक एट द एनडी एरे, यहाँ पे 225 क्रॉस 225 है, बट देर इज नो 3 हियर. यहाँ पे 3 है ही नहीं, बिकॉज इट इज एन ग्रे स्केल इमेज. द नंबर ऑफ चैनल्स इज 1. सो यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बट इट इज बेसिकली ए ग्रे स्केल इमेज. दैट इज वाई देर इज नो नंबर. शेप पे 3 नहीं है. यहाँ पे शेप क्या है, 225 क्रॉस 3 है. यहाँ पे शेप क्या है, 225 क्रॉस 225 है, बट यहाँ पे 1 है, बट इट इज नॉट शोइंग इट लाइक दैट. नाउ लेट्स क्लिक ऑन डेटा. अभी यहाँ पे देख लो, इट हैज ओनली 2 ब्रैकेट्स एट द स्टार्ट. इट इज यहाँ पे देख लो, इट हैज 3 ब्रैकेट्स एट द स्टार्ट. दैट मीन्स the machine will understand whether it is a grayscale or a colorful image by looking at the shape of the array. And every pixel value decides how much every pixel value decides how the image looks like. ठीक है, अभी पहले वाला ये देख लो. यहाँ पे इमेज को प्रिंट करते रुको. And I will just do image. I will just load this one and I will just do this. बाय डिफॉल्ट ये ऐसे प्रिंट करते हैं बिकॉज इट इज नॉट CV2. ओपन CV का कुछ दिक्कत है, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, बट अभी के लिए नहीं है. बट आई वांटेड टू शो यू ए क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ 225 क्रॉस 225 क्रॉस चैनल 1 है एंड 225 क्रॉस 225 क्रॉस चैनल 3 का फर्क क्या है, and how the machine will understand whether it is a grayscale image or a colorful image based upon the channels. And each pixel values will also get changed if the image is in RGB channel or any kind of channel. ठीक है, there are a lot of people on the chart. Give me a minute. Pixel matrix. Yeah, the pixel is a matrix actually. Can we have more than 3 channels for an image? Technically yes, but I'm not sure how to visualize that. Can you please explain how to do the coding? Yes, I will explain, don't worry. So what does each matrix of 3 by 3 represent here? So 3 by 3 represent the 3 different channels actually. How pixel values are stored. I mean, pixel values are stored as a array format, nothing else actually. I cannot do the debugging sessions here, this one. Just changing to 0, can we do RGB to black and white? I mean, अगर आपने पूरा 0 कर दिया, if you look at the values here, यहाँ पे पूरा 0 कर दिया तो it will be a black image, it will not be anything else.
Can you explain which inner brackets refer to which pixel? Okay, I will explain that. Means in grayscale channel as black and white. There are a lot of questions. ठीक है, ठीक है. So I will just explain this topic once. हो गया, इससे इसके बाद हो गया. So यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, that is one thing that I wanted to make sure to help you. रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है. So ये हमारा इमेज है. लेट्स assume फॉर सिंप्लिसिटी सेक इतना ही लेते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 4 क्रॉस 1 2 3 4 5 कुछ तो है, 4 क्रॉस 5 है, समझो. लेट्स assume लाइक दैट. एंड इट इज आरजीबी कलर है, सो इसलिए तीन तीन चैनल रहते हैं. एंड एक है, दो है, तीन है. एंड 1 2 3 1 2 3. एंड वी विल टेक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट पिक्सल है. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू समझो 10 है. यहाँ पे दिस इज लाइक आर चैनल, जी चैनल एंड बी चैनल. ओके, यहाँ पे वैल्यू 12 है. एंड यहाँ पे वैल्यू होगा 11 है. एंड सेकंड पिक्सल का वैल्यू है 8 है. इसका वैल्यू है 8 है. इसका वैल्यू है 8 है, कुछ जो कुछ भी हो. इसके वैल्यू 0, इसके वैल्यू 30, इसके वैल्यू 20. ठीक है, ऐसे हर एक पिक्सल का वैल्यूज रहता है, ये तो क्लियर है. सो अभी इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. सो एरे रिप्रेजेंट कैसे होता है, लेट्स टेक दिस वन. फर्स्ट आर जी बी का वैल्यू, फर्स्ट पिक्सल का वैल्यू ले लो 10 कामा 12 कामा 11. एंड नेक्स्ट यू टेक वन मोर स्टफ, दिस वन 8 कामा 8 कामा 8. And take this one 0 comma 30 comma 20, and you try to do for all of these pixels. So जितना पिक्सल, let's assume this pixel value is 125 19 128 and 1110. So ये होता है 125 128 110. ये सारे ऐसे एनक्लोज करते हैं, कितना चैनल से उतना ब्रैकेट से. So this will be the array representation of an colorful image. ठीक है. सो अगर हमारे पास एक इमेज ऐसा है एंड ए आरजीबी चैनल्स है, सो यू हैव मल्टीपल चैनल्स आरजीबी, एंड हर एक पिक्सल इन ईच चैनल विल हैव द वैल्यू. एंड हर एक वैल्यू एट एवरी पोजीशन के लिए वी टेक दिस इनटू ए एरे, एंड ये सारे एरे के अंदर एनक्लोज करते हैं, विच इज लाइक एन डायमेंशनल एरे. And this will be the value representation of an image inside a Python. It could be any kind of library, but ऐसे जब मशीन रीड करते हैं ना इमेज को, ऐसे रीड करते हैं. होपफुली दैट इज क्लियर. सो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट विथ the stuff that we have learned so far, because all of these are I mean foundations of computer vision. I don't want anyone to be left without a lot of doubts. ठीक है, अभी हम क्या देखते, पहले हमने क्या देखा. We have seen computer vision होता क्या है. I will just summarize everything from the start to the end. I will just take 5 minutes and then हम बात करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, कंप्यूटर विजन होता क्या है, एंड आई विल शेयर द नोटबुक आफ्टर द सेशन एंड्स, एंड दिस नोटबुक विल बी अपलोड ऑन टू द वेबसाइट कुछ देर के बाद, सो डोंट वरी. एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू द गूगल कोलैब नोटबुक एज वेल, अगर इफ इट इज feasible for you, you can learn from it. And coding, I would not recommend anyone to just copy paste. I will recommend everyone to type so that you understand what you are doing in the coding part. ठीक है, चलो. अभी हम रिफ्रेश करते हैं, कंप्यूटर विजन होता क्या है. कंप्यूटर विजन इज बेसिकली गिविंग द मशीन द कैपेबिलिटीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमेजेस एंड वीडियोस, जो कुछ भी हो. बट बेसिक चीजें इमेजेस के ऊपर वीडियोस के ऊपर है. देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स है.
like facial recognition, object detection, medical diagnosis. There are n number of fields है, एंड एप्लीकेशंस भी बहुत कुछ है। आई मीन डे टू डे लाइफ पे इतना सारे आ रहा है। आई मीन भाई साहब, यू हैव लॉट ऑफ स्टफ। सिक्योरिटी के फील्ड्स पे, रिटेल फील्ड्स पे, एग्रीकल्चर का फील्ड्स पे, बहुत सारे फील्ड्स पे यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग यूजिंग कंप्यूटर विजन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डीप लर्निंग पे यूजुअली रहता है क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स है। न्यूरल नेटवर्क्स पे एक सेगमेंट होता है एमएलपी, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स। सो इसको बोलते हैं मल्टी लेयर, क्या हो गया, परसेप्ट्रॉन। कुछ तो लैग हो रहा है, पता नहीं, फॉर फॉर सम रीजन, ठीक है। अब मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन है, एंड यूजुअली हम यूज करते हैं टैबुलर डेटा के ऊपर मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स को, ठीक है। दिस दिस वी कैन टेक्निकली यूज ऑन इमेजेस, बट इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं ले पाया। सो वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन द लेटर सेशंस एज वेल। इसलिए साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स। दीज आर मच बेटर इन परफॉर्मिंग द टास्क्स where MLP cannot do if the data is in image format, ठीक है। वो कैसे किया, कैसे बिल्ड किया, इंस्पिरेशन कहाँ से आया, दैट इज फ्रॉम डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च इन द लास्ट 50 years or so, and having a lot of GPUs to available to tweak and all that stuff. So पहले क्या करता था, they wanted to look at how human brain works and understand the things visually. So उसके लिए they started doing experimentation on animals. सो जो जो मैंने दिखाया पहले, सो वहां पे दे कीप द कैट एंड दे नोटिस दैट some part of the neurons will get fired up when they tend to see some kind of shapes, जो कुछ भी rectangular shape हो, vertical shape हो, it could be anything. And there are multiple layers in the visual cortex where it is responsible for doing a lot of different kinds of information extraction. And ये सारे hierarchical level पे एक information will be passed from one layer to another layer, and all of these layers at the end will give you the whole image of what you're looking at to understand what is happening. So ये सारे की takeaways है। hierarchical relation है, multiple layers है, every layer is carry forwarding the information from the previous layer to the next layer, and all of these together will work in coordination to have the visual cortex working on a human brain, ठीक है। एंड देन वो सारा हिस्ट्री है, बेसिक चीज है। And then we have understood image होता क्या है। So what is a pixel? Pixel is the smallest form of an image, and a lot of pixels together combined is called an image, ठीक है। And in a given image, the number of pixels ज्यादा है, that means the clarity of the image is really good, and we usually tend to prefer the images which are having higher pixels because आपका clarity ज्यादा दिखता है। And even if you zoom in, पिक्सल लेवल देख सकते हैं आप, बट द क्लैरिटी स्टिल रिमेन्स अच्छा है, ठीक है। एंड एक इमेज को रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द रोज एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द कॉलम्स, ठीक है। So which is like n1 cross n2, it is similar to data frame shape जैसे है। So you can read the image into an array in Python, and you can print the shape as well, and you can look at the values as well. And image होता है दो तरीके का, एक is grayscale image है and एक है colorful image है। And we have one more concept called channels. और channels होता क्या है? So whenever you have a colorful image is a group of 3 different channels है। हर एक चैनल का शेप सेम ही रहता है, बट द वैल्यूज माइट डिफर, एंड ऑल ऑफ दीज 3 चैनल्स टुगेदर विल बी टुगेदर फॉर्मिंग ए कलरफुल इमेज। सो आरजीबी पे 3 चैनल होता है, ग्रे स्केल पे एक ही चैनल होता है। एंड व्हेन यू आर रीडिंग द डेटा इन पाइथन, इफ यू हैव ओनली वन चैनल, इट इज नॉट शोन एज अ स्पेसिफिक शेप, बट इफ यू हैव RGB channel, you can get to see the shape as well. There might be images which are having more number of channels as well, but it is a little bit hard to visualize those things and to show those things as well, because when we are doing deep learning architecture models, you can see shapes like 100 cross 100 cross 100. That doesn't mean it is an image with 100 channels, but it is something different. I will explain that in the later parts of the sessions, ठीक है। एंड देन हमने ये भी देखा कि मल्टीपल चैनल्स रहते तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, एंड व्हाट इज दिस शेप डिफरेंस n1 क्रॉस n2 क्रॉस c मतलब क्या है। n1 is number of row pixels, n2 is number of column pixels, and c is number of channels, ठीक है। एंड देन वी हैव सीन हर एक पिक्सल का वैल्यू यूजुअली रहता है 0 to 255 के अंदर। 0 मतलब ब्लैक है, 250 मतलब व्हाइट है, एंड इफ यू हैव मल्टीपल वैल्यूज इन बिटवीन, यू हैव मल्टीपल कलर्स के हिसाब से रहता है, ठीक है। एंड
अगर एक पिक्सल एक कलर के ऊपर डिपेंड है तो मशीन कैसे रीड कर सकते हैं? देन कम्स द न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इट. whenever you are reading an image into a python or programming language, it will be converted into the numbers. और numbers का representation मैंने दिखाया already. So how it will be formed is like this. So अगर हमारे पास एक इमेज है, कलरफुल इमेज है, we have multiple channels and हर एक का पिक्सल वैल्यू at same position will be clubbed together in a given array, and all of these will be sorted in the given array, and then they will do all of the together, and उसको बोलते हैं complete image. So these are all the things that we have learned today on this session. Hopefully you have learned something new, and I think this is good enough for today's session. Let me go through the chart for some time. Give me a minute. Sorry. Wouldn't this effectively become a second array? Yes, clear. Why only three values in there in the array? Because there are three colors RGB. Yes. Getting error while uploading the image, probably some issue with Windows. Yes, that is because there is this backslash and forward slash issue. So, ठीक है. Friends, okay, ठीक है. We still have 5 more minutes left. I want you to provide some feedback like कैसे लगा? I mean, the foundations are good, or is the pace is good enough? Is there anything that I can improve for the next thing? Please let me know for the next couple of minutes and देखते हैं. Pace is slow, ठीक है. Does grayscale image values of 0 to 55 not in between? शायद we need to. We have seen here harmony, right? We have converted the image into grayscale here, but यहाँ पे भी normal वाला colors भी है ना, ऐसा नहीं कि 0 to 55 नहीं है. Okay, pace is slow. ठीक है, we will pick up the pace. Don't worry. OpenCV versus Keras. CV. OpenCV थोड़ा अच्छा है. Lot of functionality Keras से अच्छा. But we will also learn Keras. The way of explanation is easy. Thank you. Yes, we will write the code from scratch CNN के बारे में. So don't worry. अभी के लिए मैं इसे छोटा कोड के लिए दिखाया बस. Say something for this issue. Well done. Start. Thank you. All good. It was awesome. Please cover everything. Then even the explanation. Yes, code also will do from scratch, Mayank. So don't worry. It's good for beginners to understand easily. Thank you so much. Any books? Shubham, I don't usually read books. I might not be a good recommendation to you. I usually go YouTube, Wikipedia, Medium blogs. I go to Kaggle, read quotes. So I just सीखता हूँ मैं usually. Please add more project if possible. Yes, we will. This is just a basic understanding session है, इसलिए मैंने इसे रखा. But अगले से we will have a lot of theory and lot of coding part as well. Sir, can we cover image segmentation? Yes, हम image segmentation भी cover करते हैं. Yes, बहुत so है. Yes, you are good. RGB three channels है, इस पे एक ही channel रहता है. Very good induction lecture. Thank you. Very good lecture. Are we using transfer link? We will be using transfer link, so don't worry. We will be doing image segmentation, so don't worry. PyTorch, देख सकता हूँ. I'm not sure उनका which company. You can check out my company on my LinkedIn page. So there you have all of my technical stuff. Sir, kindly, okay, are we going to cover till end deployment? Yes, we are going to cover the deployment as well. So don't worry. At the end, we'll be doing a self-driving car. That will be really interesting project. I'm still working on the project because मैं अभी पहले एक महीने से कर रहा हूँ, but we will be doing the project as well. Our record lecture will be available within the next 3 to 4 hours, शायद. And I will put all of these resources as well on the website. So don't worry. You mentioned grayscale image will have the same color. No, not the same color. It is black and white पे होता है usually. Black and white पे shades भी रहते हैं ना. Black का shade होता है, white का shade भी होता है. It is not ऐसा नहीं है कि एक ही color होता है पूरा. Should I use Google वाला पर Jupyter notebook for practice? जो कुछ भी यूज कर सकते हैं अंजलि पांडा, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है. 3D reconstruction will be no, Yash, we will not do that one actually. Yes, Prince Jitendra, we will अगले से we will keep 5 to 10 minute slots for the dots itself, so we will not miss the pace for other students. So don't worry.
Pixel size reduced when the color image is converted to grayscale. No, Mukesh, it will not be changed. Transfer learning we will be using. So yes, yes. ठीक है I we still have 5 minutes left and I will be done with it in the next 1 minute. एक thumbs up और thumbs down दे दो, so it will be easy for me to think about क्या करना है क्या नहीं करना है अगले सेशन में. कूल कूल कूल. थम्स अप ही दे रहे थे. अच्छा अच्छा है बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है. हाँ ठीक है guys. We will stop the session here and we will meet in the next session tomorrow at 6 o'clock. ठीक है. Thank you so much everyone. Thank you Sufal for being there on the session as well. Thank you. Have a nice day.